हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएस गाइड सागर शिर्के साइन इन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इंटरनेशनल रिस्क असेसमेंट अप्रोच डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डोजियर प्रिपरेशन। तो ये काफी लंबी वीडियो बनने वाली है और काफी अच्छी वीडियो बनने वाली है। आप इसी वीडियो में आप सीख पाओगे कि इंटरनेशनल रिस्क असेसमेंट अप्रोच क्या होती है, और जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए डोसियर प्रिपरेशन करते हो, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है, आज हम उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो देखिए, रिस्क पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी डिस्कस की जाती है कि रिस्क द सीवियरिटी एंड प्रोबेबिलिटी उसकी कैलकुलेट की जाती है, जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ फूड। सीवियरिटी इज द सीरियसनेस ऑफ हार्म एंड प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस ऑफ ऑकरेंस। तो देखिए, दिस डेफिनेशन complies that risk can be controlled by managing probability and severity. Then the risk analysis. The risk analysis is analyzed on the three major topics, that is the risk assessment, risk management, and risk communication. तो जब आप रिस्क कम्युनिकेशन करते हो तो आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट जो आपको एनालिसिस करना होती है। तो देखिए, रिस्क असेसमेंट क्या होती है? दिस इज द साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो रिस्क असेसमेंट में इंपॉर्टेंट चीज आती है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड कैरेक्टराइजेशंस एंड एक्सपोजर असेसमेंट एंड रिस्क कैरेक्टराइजेशन। देन देखिए, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन that involves identifying those biological, chemical, and physical agents capable of causing adverse health effects and that may be present in a particular food or a group of food. Examples are listeria monocytogenes is smoked fish or methyl mercury in seafood. तो ये है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए, उसके अंदर तो हजार्ड कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? द सेकेंड स्टेप इज a hazard characterization involving qualitative and or quantitative evaluation of the nature of the adverse health effect associated with biological, chemical, and physical agents that may be that can be agents that may be present in food. Hazard identification can further be involved divided into two parts. That is a description of the hazard and dose response relationship if इट एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर वो दो होता है कि हजार्ड एंड डोज रिस्पॉन्स कितना होता है, जो कि ज्यादा हार्मफुल होता है। तो व्हेन प्रिपरेशन द प्रिपेयरिंग द हजार्ड कैरेक्टराइजेशन, इट इज एसेंशियल टू कंसीडर the immunological and physiological status of the host as well as the nature of the hazard. For some hazards, specific subpopulation such as infants and young children, the elderly and pregnant women, and immunocom- immunocompromised person may be at increased risk. Then आता है exposure assessment and risk characterization. So in this exposure assessment and risk characterization, the third part is exposure assessment. It is the qualitative and the quantitative evaluation of the likely intake of biological, chemical, and physical agents via food, as well as possible exposure from other sources. It is important to know the level of contamination in food at the time of consumption and the number of serving of food that is potential dangerous, जो potential dangerous हो सकता है कि उसका identification करना, that is also important. The final part of the risk assessment is the risk characterization. That is the process of determining the qualitative and quantitative estimation include attendant uncertainties of the probability of occurrence and severity of known potential adverse health effects in a given population based on hazard identification, hazard characterization, and exposure assessment. International risk assessment in this scientific advice to codex, that is international risk assessment and international risk management. तो देखिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन होती है, उन्होंने आसान किया है कि जेफा, दैट इज अ फूड एडिटिव्स वेटरनरी ड्रग्स रेसिड्यू कंटेमिनेंट्स इन फूड, जो आइडेंटिफाई करता है इसके लिए, और जेएमपीआर, दैट इज अ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन द फूड, रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस रिस्क असेसमेंट। तो उसके बाद आता है JEMR, दैट इज माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड्स इन फूड, जो आइडेंटिफाई करता है उसके लिए। एंड देखिए, साइंटिफिक एडवाइस के अनुसार उसका डिसीजन लिया जाता है। एंड एड HOC एक्सपर्ट कंसल्टेशन इमर्जिंग इश्यूज, एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजीज इन एग्री सेक्टर। तो यहाँ पर जो भी रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट है,
वो असेसमेंट वो किया जाता है बाय कोडेक्स। कोडेक्स इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है। Then areas of risk assessment in which you can understand the chemical and microbiological. First is the food additives, flavoring agents, residues of veterinary drugs, pesticides, residues, contaminants, naturally occurring toxins, and in microbiological well-known pathogens like salmonella और ये जो लिस्ट्रेमोनो साइटोजिनिस जो है वो है। उसके बाद है कैम्पिलोबैक्टर, विब्रियो, तो ये सारे काफी वो एग्जांपल्स है। देन देखिए, गोल ऑफ फूड रिस्क मैनेजमेंट इज द इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेफ एंड होलसम फूड, तो ये इसका मेन टारगेट होता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इट्स रेगुलेशन, दैट इज ऑन 25 November 2015 the European Parliament and the Council adopted the regulation of the European Parliament and of the Council on novel food. First is the regulation requires that all applications of the authorization of the novel food shall be submitted to the Commission, who may then request a risk assessment from the European Food Safety Authority, that is EFSA, in assessing the food safety and novel food. EFSA shall, where appropriate, consider the following. देखिए उसके अंदर है whether the novel food concerned is a safe as a food from a comparable food category already exists on the market within the union. Then आता है whether the composition of the novel food and the conditions of its use do not pose a safety risk to human health in the union. ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान देना। तो these are the regulations development. Then the novel food, which is the intended to replace another food, does not differ from that food is a such as a way that is normal consumption would be nutritionally disadvantageous for the consumer. This guidance presents a common format for the organization of the information to be presented in order to assist the applicant in the preparation of a well-structured application. Demonstrate the safety of the novel food. Adherence to this format will facilitate easy access to information and scientific data in applications to help EFSA to carry out its evaluation and to deliver its scientific opinion in an effective and consistent way. Then, organization and content of the application. The following information should be provided in the application and the structure should follow a common format. Data provided in the application should be organized into three parts. The part one is the contains the administrative data such as information relating to the applicant, and the part second is the contains information specific to the novel food with respect to identity of the novel food in the section of 2.2, and production process section 2.3, compositional data section 2.4, specification जो section 2.5 है, the history of use of the novel food and or of its source section 2.6, and proposed uses, use level and anticipated intake section 2.7, absorption, distribution, metabolism and excretion section 2.8, nutritional information section 2.9, toxicological information section 2.10, and the nutritional information section 2.9, toxicological information 2.10, and allergenicity section 2.11. It should include a list of all references. Part 3 is a comprises the glossary or abbreviations of terms quoted throughout the dossier, the certificates on the accreditation of laboratory certificates of analysis and contents full copies, reprints of all pertinent scientific data published and unpublished, full study reports and scientific opinions of nutritional national and international regulatory bodies. तो ठीक है, तो ये है सब organization and content of the application. देन पार्ट वन में देख सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो डाटा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डोजियर एप्लीकेंट, इसके अंदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन 5 एंड फिफ्थ पॉइंट है एंड सॉरी पॉइंट 5 एंड कंटेंट पर्सन है जो जिसके साथ आपका कांटेक्ट होगा, इंडिकेट द कांटेक्ट पर्सन ऑथराइजेशन authorized to communicate with EFSA on behalf of the applicant. देन है रेगुलेटरी स्टेटस आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन अगर हो रहा है
तो if the novel food has been submitted by the applicant to a regulatory body for authorization outside the European Union, please indicate the status of the evaluation by each regulatory body if more than one, ठीक है, as appropriate. तो देखिए under consideration specify the proposed condition of use if they are different, the date of submission and the recipient regulatory body. Then withdraw specific the conditions of the use if they are different of the novel food which was withdrawn, the date of withdrawal, the reason of withdrawal, indicate the regulatory body at the time of withdrawal. Then authorized के अंदर आता है जो specify the conditions of use, they are different of the novel food which has been approved. The date of approval indicates the authorization regulatory body, and if available provide a copy of the scientific opinion of the regulatory body which authorized the novel food in part 3, ठीक है. उसके बाद रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट होता है तो देखिए स्पेसिफाई द डेट एंड द रीजन ऑफ रिजेक्शन, इंडिकेट द रेगुलेटरी बॉडी विच रिजेक्ट द नोवेल फूड, एंड इफ अवेलेबल फूड copy of the scientific opinion of the regulatory body which rejected the novel food in part 3, तो ये भी उसको उनको रिजेक्टेड का पूरा रीजन देना पड़ता है. देन इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द नोवेल फूड, टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेटा. देखिए ये काफी वीडियो बड़ी होने वाली है तो मैं काफी फास्ट ले रहा हूँ, एंड यू हैव टू स्लो डाउन दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि मेरे पास भी काफी वक्त कम है, और ये जो पीडीएफ है वो बनाने के लिए, ये जो पीपीटी है वो बनाने के लिए काफी वक्त लगता है. एंड आई होप यू लाइक दिस चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सब्सक्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लाइक, आपका लाइक जितना बढ़ेगा उतना ही इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों के पास, लोगों के पास, इंडियंस के पास, जो भी मेरे लोग देखने वाले हैं उनके पास पहुंचने वाले हैं. Then please and please like, share and subscribe this channel, please. And characterization of the novel food इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक डाटा, इसके अंदर क्या होता है कि आपको देना ही पड़ता है कि नोवेल फूड का जो टेक्निकल एंड साइंटिफिक डाटा है उसके अंदर द इंट्रोडक्शन द फूड novel food should be briefly described in the introductory paragraph, including the source, the principle of the production processes, and the typical compositional features, its purpose and intended use should be described. Then the key identity of the novel food is can the information on the identity of the novel food should be provided depending on the classes under which the novel food falls. The panel notes that the proposed classification in the best on the chemistry, production process, and the source of novel food for the purpose of the scientific assessment and is not meant to reflect the regulatory categories outlined in Article 328, okay, of the regulation. There may be cases where a novel food could be allocated to two or more classes, chemical substances and food products produced by a microorganism. In such cases, the relevant information of all applicable classes should be provided. इसके अंदर अगर chemical substances है उसके लिए chemical name when appropriate according to IUPAC, ठीक है, जो nomenclature जो rules है उसके अनुसार होना चाहिए. उसके बाद CAS नंबर, उसके अंदर if this has been attributed and all the identification numbers like, तभी आपको CS नंबर होता है. Synonyms, trade names and abbreviations. मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ कि you are the pro in this section, so you can understand what is the long form of IUPAC and CAS. अगर नहीं मालूम तो प्लीज आप सर्च मार के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए. थैंक यू. उसके बाद देखिए मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, stereochemistry, molecular mass DA, and polymers, structural formula of monomers and starting materials, reagents involved in the polymerization, structure of the polymer, number, average molecular weight, and weight, average molecular weight, nature and degree of modification of the polymer, particular particle size and shape and distribution. तो ये आप अगर आपका पॉलीमर है तो उसके अंदर ये चीज है. Food consisting of the isolated form or produced from microorganisms of fungi or algae. Scientific Latin name, family, genus, specific strain, and देखिए जो species है particular strain है according to the international codes of the nomenclature. The synonyms that may be used interchangeably with the preferred scientific name, और scientific name उसके साथ जुड़ना, और scientific name जो nomenclature के अनुसार जो दिया गया है वही आपको यूज करना है.
देन देखिए जो फूड कंसिस्टिंग ऑफ द आइसोलेटेड फॉर्म और प्रोड्यूस ऑफ मटेरियल ऑफ मिनरल ओरिजिन। तो देखिए द सेक्शन कंसर्न्स और इनऑर्गेनिक मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स आइसोलेटेड फ्रॉम rocks and utilized as inorganic or organic salts or chelates। तो देखिए केमिकल नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC, ठीक है। Nomenclature rules: CAS number, synonyms, trade names, abbreviation, molecular and structural formula, molecular mass, particular size, shape, crystal form and distribution। तो ये उसके अनुसार होने चाहिए। Then food consisting of isolated form or product from plant और their parts। तो इसके अंदर होना चाहिए साइंटिफिक नेम लैटिन, उसके बाद बोटेनिकल नेम होना चाहिए। देन है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स जो भी बेटर बोटेनिकल नेम के हैं वो भी आपको कंसिडर करने हैं। एंड फॉर प्लांट्स देन वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस एंड मेथडोलॉजी। ठीक है। कॉमन नेम्स जो होते हैं वो भी आपको वहां पर मेंशन करने पड़ते हैं कि किस कंट्री में उसको नेम क्या दिया जाता है उसके लिए। एंड पार्ट्स यूज्ड एग्जांपल देखिए रूट लीफ सीड्स अगर है उसका पार्ट आपको कंसिडर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जियोग्राफिकल ओरिजिन, कंटिनेंट है, कंट्री है, रीजन है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। उसके बाद द प्रोडक्शन प्रोसेस, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, द प्रोसेस एम्प्लॉयड the produce the novel food, example like chemical synthesis, enzyme catalysis, fermentation or isolation from the natural source or should be described, and the description of the production process should be detailed enough to provide the information that will form the basis for the evaluation of the bioavailability, nutritional value, and safety, which should be addressed in the respective section with regard to safety. The description should include information on potential byproducts, impurities, or contaminants. उसके बाद non-confidential description of the production process. If the detailed description on the production process, section 2.3.1, contains confidential elements, the applicant is asked to provide a non-confidential summary of the production process between half to a maximum of a page in length. Compositional data. The information should include qualitative and quantitative data on the composition as well as the physiochemical, biochemical properties and microbiological characteristics of the novel food. Section 2.4.1 outlines general data requirements applicable to all novel foods. Section 2.4.2 and 2.4.3 set specific requirements depending on whether the novel food is a single substance or a simple mixture thereof, the complex mixture or whole food 1.3। ये आपको जानना है कि what I'm talking about compositional data उसके अंदर क्या होता है। Then we are talking about anticipated intake of the novel food। अगर anticipated है तो देखिए intake of food novel food है तो उनके देखिए on the basis of the information of provided estimation of the anticipated daily intake of the novel food are required per kg body weight and in absolute amounts। ठीक है। Estimation of mean and high, the list 95th percentile and anticipated daily intake of the novel food are requested for each target population group, including where relevant vulnerable groups such as the children, pregnant, and a lactating woman. The concurrent consumption of all food categories in which a novel food ingredients is proposed to be used should be addressed in the estimation possible consideration and the different consumption scenarios. The highest estimated daily intake and at least the 95 percentile and among the population groups from a representative database, example EFSA, Comprehensive European Food Consumption Database, or National Dietary Service, is recommended to be used as the starting point of the safety evaluation for the intake assessment on the basis of per kg body weight. The EFSA guidance on the default values and rounding should be taken into accounts. ठीक है, EFSA Scientific Committee 2012 B। Then chronic intake estimates should be provided by default in case the available data from toxicology or human data raises concern regarding an accurate effect. Acute intake estimates should also be considered. The application should document the methodological aspects of the intake assessment, in particular the source of data used in source of food consumption data and food consumption data, the scientific principles
and methods applied. The assumption made and their rationale, in particular with respect to the assignment of the food to a particular food category or with respect to the model used for the calculation of high intake levels. Then, novel food guidance. In this, identity of novel food NF, production process, compositional data, specifications, history of use, जो हिस्ट्री ऑफ यूज है वो भी आपको देना पड़ता है इन रिगार्डिंग नॉवल फूड, proposed uses, use level of the anticipated intake जो अभी हमने डिस्कस किया, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन एंड एडीएमई। आपको मालूम होगा व्हाट इज एडीएमई, नहीं मालूम है तो आप देखिए, आप उसको ये करना है, नीचे ही लिखा है, मैं आपको बोल रहा था कि कमेंट करो। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म, एक्सेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। Then toxicological data and allergenicity that you have to maintain and mention in your that report particular. Yeah, then है examples proposal. Proposed uses you and use levels can trigger the need for more. Compositional data. तो देखिए level of inclusion means replacement, further investigation of micronutrients with established tolerable upper intake levels, quality and bioavailability of micronutrients. Use of the novel food as ingredient in foodstuff produced with heat treatment. Investigation of the potential information of process contaminants. Example, acrylamide and compositional data can affect the proposed use and uses and use level. Example, level of the undesirable substances can limit the permitted uses use level. Then the NF must not be nutritionally disadvantageous. Investigate exceedance of tolerance, tolerable upper intake levels of micronutrients, qualitative and quantitative analysis, and anti-nutritional factors. Example: oxalates, lectin, trypsin inhibitors, and phytic acid that can inhibit absorption of modified bioavailability of nutrients. Possible interactions of the NF per serving with nutrients that we had to mention in our report. Throughout characterization of the novel food might reduce the need for toxicological studies in some cases. Particular size can trigger ADME, जो भी हमने discuss किया, consideration and soluble aspects may be affect ADME and toxicological strategy. Chemical structure, affinity, a compound may affect the need for toxicological studies. ठीक है, टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट अफेक्ट्स टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल ड्यू टू द एग्जांपल ऑफ पोलैरिटी, नीड फॉर टेस्टिंग स्पेसिफिक fraction of the NF and genotoxicity of protein levels in the NF. ठीक है, प्रोफाइल ऑफ प्रोटीन्स इन द NF, molecular weight, heat, stability, sensitivity to pH, digestibility by enzymes. Investigation of the sequence homology of the NF protein with known allergens. Potential or proven allergenicity is not a reason to say that a novel food is unsafe. ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ता है. Then safety assessment of the novel food by EFSA contributes to the resilience, diversity, and safety of the food chain by providing risk managers and policymakers scientific advice on such products before potential European Union market authorization. The respective EFSA guidance provide advice to food businesses operators on the novel foods characterizations approach to be followed, following at the same time flexibility regarding data producing using new scientifically documented approach. Then compositional data define a scientific requirements in other areas of an dossier can be defined by other scientific requirements of the novel food dossier via a reciprocal relationship are the backbone of the NF uh, safety assessment, preparation by the applicants, assessment by EFSA. Then you can say the new product development process in seven steps. First is the idea generation, then research, third planning, fourth prototyping, fifth sourcing, sixth costing, and seventh commercialization. So these are the 7 steps of the product NPD, new product development process. Then research and development, new materials, new formulations, new product changes. ठीक है,
देन देखिए न्यू प्रोडक्ट में आता है इंजीनियरिंग, न्यू प्रोसेस, न्यू इक्विपमेंट, न्यू पैकेजिंग। प्रोडक्शन में आता है कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट। ये प्रोडक्शन के अंदर आता है कि कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए फॉर न्यू प्रोडक्ट। देन आती है फैक्ट्री लैबोरेटरी, द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट लाइन एक्सटेंशन। सो दिस इज ऑल्सो एक फैक्ट्री के अंदर एक लैबोरेटरी, ये एक इनहांस फैक्टर होता है। देन consumer research, markets research, food design, packaging design, industrial design, and food testing. This is come under the knowledge acquisition. Then consultants in the product development, processing, safety, nutrition, engineering. ये भी आते हैं। यूनिवर्सिटीज रिसर्च एंड एसोसिएट्स इसके अंदर हेल्प करते हैं काफी। देन देखिए रॉ मटेरियल सप्लाईज जो है, इक्विपमेंट सप्लाईज, वो इसके अंदर आते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग, transport storage, then agents, broker, distributors, retailers, industrial consumers, financiers, bank insurance and government regulators. These are come under the system acquisitions. ठीक है, तो ये सिस्टम के अंदर एक्विजिशन होती है एंड ऐसे होता है द कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द डोजियर एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर्मेट। एंड देन इज द लास्ट स्लाइड इज द इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर्स। तो आपके पूरे एनपीडी और डोजियर फॉर्मेट को कौन से फैक्टर्स है कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं कि आपका जो फैक्टर है, प्रोडक्शन है, जो भी है आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो किस किस फैक्टर से अफेक्ट होगा। तो वन ऑफ देम इज द इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर। ओके, मैं थोड़ा इस तरफ लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। तो देखिए इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर्स इसके अंदर ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड हो सकती है ऑल ओवर दिस सेक्शन। दैट इज द फर्स्ट इज द सोसाइटी, द एटीट्यूड्स एंड पॉलिसी। ठीक है, तो अगर देखिए अगर आप एनपीडी कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट अगर रिलेटेड है काउ या फिर बफेलो के साथ इन इंडिया, तो डेफिनेटली ये जो सोशल पैरामीटर्स है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के, पॉलिसीज होता है, पॉलिटिक्स होते हैं, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो देखिए आपको जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे एंड इट शुड बी यू नो व्हाट, एक लीगल होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई आप न्यू प्रोडक्ट कर रहे हो और वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर एक जनरेट करता है एक नशा, एक हैंगओवर, तो डेफिनेटली वो एक पैरामीटर जाता है कि उसका कितना इम्पैक्ट होगा। क्योंकि एक कफ सिरप था, उस कफ सिरप का उपयोग था वो काफी सारे लोग एक नशे के तौर पे किया करते थे कुछ समय पहले। सो दैट्स व्हाई this is also impactable whenever you are talking about and the documenting the documents about the new product development। तो आप उसके समय उस समय आपको उसका काफी ध्यान देना पड़ता है। सोसाइटी, एटीट्यूड्स एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए देन है इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक होता है, फिजिकल होता है, ये भी फैक्टर्स इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनकी नीड्स है या नहीं। एटीट्यूड्स होते हैं, बिहेवियर होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर्स। उसके बाद रेगुलेशन एस्पेक्ट्स है, वो भी आपके एनपीडी के ऊपर डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर काफी इफेक्ट करेंगे। उसके अंदर देखिए कॉम्पिटिशन, तो प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, कंपनी स्ट्रक्चर, कंपनी के अंदर देखिए स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और नॉलेज और रिसोर्सेज कैसे काम करते हैं। और टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग ऑल योर एनपीडी एनपीडी प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर और एक पार्ट है जो अफेक्ट होता है सोशल और कंप्यूटर से, दोनों सेक्शन से। दैट इज द प्रोजेक्ट एम। आपका प्रोजेक्ट का एम क्या है, प्रोजेक्ट डिसीजन क्या है, प्रोजेक्ट आउटकम्स क्या होने वाले हैं, और प्रोजेक्ट बजट क्या होने वाला है, और प्रोजेक्ट कंसेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस। ये जो पैरामीटर्स है वो काफी काफी इफेक्ट करते हैं आपके टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट को। और आपका जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपका जो भी आपका नॉलेज है, आपका जो प्रोसेस आपने किया है, डेवलपमेंट किया है, तो उसके अंदर ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड आई होप मैंने जो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, नॉलेज दिया, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देखा करते हैं लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी सारे लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, और काफ़ी सारे लोग इसका नॉलेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर दोस्त एंड होस्ट सागर शिर्के साइनिंग ऑफ। And please like, share, and subscribe, like this channel, and please, thank you so much for watching my channel again and again. Thank you so much. Thank you.